x1 represent it's the first stage. So at first stage, we are going to maximize the first part, which is constructed using the variable x1. So it is 3x1. And here we have to find out this upper limit on the variable x1, and this upper limit is given by the constraints. Okay. So how to find out this b, where this b is equal to the minimum of. Okay, so minimum of what? See, if you observe the first constraint is x1 lesser than or equal to 4. So what is the upper limit here? Here the upper limit is 4, correct? Then if you observe the second constraint, in second constraint there is no x1. See, one thing that you must pay attention on, the first constraint can be written as 1 into x1 plus 0 into x2 less than equal to 4. The second constraint can be written as 0x1 plus 1 into x2 lesser than or equal to 6. And the third constraint is 3x1 plus 2x2 lesser than or equal to 18. Correct? So when you want to find out the upper limit on x1, which is given, which is provided by the first constraint. So what you will do? You will divide the right hand side, that is b, by the coefficient of x1. So it is 4 upon 1. Similarly, in the second constraint, there is no x1, so the coefficient of x1 is 0. So that's why the upper limit is 6 divided by 0. And in the third constraint, it is 18 divided by 3. So which is nothing but minimum of 4, infinity, and 6. ये चीज आपको समझ में आई मैंने कैसे किया? See, I am taking the help of the constraints, because the limit of the x1 or any variable over the feasible region is provided by this constraint part. And one more thing that you must pay attention on, why I am taking the minimum. Can anybody answer me why we are taking b is equal to the minimum of all these things? बोलो. The reason is all the constraints are lesser than or equal to type. So what it means, for every variable, for example, if I consider the first constraint, which is x1 lesser than or equal to 4, so it gives me the x1's value is at least uh, at most 4. करेक्ट. सो मुझे अगर x1 की कॉमन वैल्यू निकालनी है, सो वो मुझे इन तीनों का लोअर लिमिट रहेगा. सो 4, 6, और यहाँ पे थर्ड कंस्ट्रेंट में, सॉरी 4, सेकंड में इंफिनिटी, द रीजन बीइंग x1 इज नॉट देयर, एंड फ्रॉम थर्ड इट इज 6. करेक्ट. सो इसमें से जो छोटा वाला नंबर है, वो छोटा वाला नंबर तीनों भी कंस्ट्रेंट के लिए काम करेगा. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मिनिमम हियर. So this minimum number is nothing but 4. So therefore we can write down our recursive function as we have the value of b. So our recursive function will be, therefore, f1, b1, b2, b3 is equal to maximum of 3x1, and where x1 is running from 0 to 4. Is that clear? And this is nothing but 3 into minimum of. Now we will find out the value of x1. Okay, no need of this. Fine. This much is okay. Then we can move towards the next part. So this is 3 times minimum of, we can take x1's value from the constraints. See, if you observe the first constraint, the maximum value is 4.
there is no x1 present in the second constraint, and from the third constraint we can write down for x1. See, we can rearrange this constraint for x1 as 18 minus 2x2 divided by 3 divided by 3. Okay, so this is the function at first stage. So let us construct the function for second stage, stage number 2. So in stage 2, we are going to include the second variable also. So therefore, f1, which is a function of b1, b2, b3, is equal to maximum over x2 running from 0 to b, and here it is 3x1 plus 5x2. ठीक है, मैंने अभी पूरा फंक्शन लिख दिया है यहाँ पे, पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, and this is the thing, but maximum where x2 is running over 0 to b, and this can be rewritten as 5x2 plus 3x1. Correct? Now we have to find out the value of b, where b is minimum of. Now let us observe the constraints. In the first constraint, there is no x2. The coefficient of x2 is 0. So that's why this is 4 upon 0. In the second constraint, the coefficient of x2 is 1. So it is 6 upon 1. And in the third constraint, the coefficient of x2 is 2. So therefore it is 18 upon 2. So it is equal to minimum of infinity, 6 and 9. So which is nothing but 6. Therefore, this f1, b1, b2, b3, it is equal to maximum where x2 is running over 0 to 6, and our function that we are maximizing is 5x2. And since our variable in this stage is x2, so we will write down this x1 in terms of x2, and which is nothing but plus 3 times minimum of 4 comma 18 minus, what was it, 18 minus 2x2 upon 3. uh, are you people getting what I am doing here? Yes, sir. Okay, fine. Hmm. Now see, we have to decide the minimum value of this bracketed function here. So therefore, minimum of 4 comma 18 minus 2x2 divided by 3. Correct? Now see, we are looking minimum which is provided by either 4 or by this expression 18 minus 2x2 divided by 3. So there are two different possibilities. दोनों में से minimum या तो 4 हो सकता है या तो minimum ये दूसरी वाली expression 18 minus 2x2 divided by 3, ये minimum हो सकता है. So we have to find out range of x2 for which the minimum is 4 and the range of x2 for which the minimum is 18 minus 2x2 minus 3 x2 upon 3. For that, let us assume the case. यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ उसको. If मान लीजिए कि मिनिमम आपका 4 आ रहा है, so if minimum is 4, then 4 must be lesser than 18 minus 2x2 divided by 3, isn't it? सही है ना? अगर इन दोनों का मिनिमम 4 आएगा तो इसका मतलब 18 minus 2x2 divided by 3 से 4 छोटा होगा. Okay, so this imply
12 is lesser than or equal to 18 minus 2x2, करेक्ट. सो 2x2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, 12 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x2 is lesser than or equal to 6 and therefore x2 must be less than or equal to 3. आर यू गेटिंग? सी हमें x2 जो है वो x2 0 से लेके 6 तक रन हो रहा है, 0 से लेके 6, है ना, दिस इज द डोमेन फॉर x2. और उसमें से जो 3 है, तो यहाँ पर यहाँ तक जो वैल्यू है इट इज 4, करेक्ट. और 3 से आगे 6 तक जो फंक्शन की वैल्यू है वो ऑब्वियसली 18 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाय 3 होगी. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. So this minimum is nothing but 4 when x is running in between, sorry, x2 is in between 0 to 3. And it is the minimum is provided by the expression 18 minus 2x2 divided by 3 when x2 is greater than 3 and lesser than equal to 6. Correct? So this is the minimum value. Now we have to find out a specific value for which see, now let us use this thing in the function that we have defined. Let me call that function as star. Correct? So star imply for x2 lesser than equal to 3, greater than equal to 0. Okay. Then we have the function f1. Actually मैंने थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, एक गलती हो गई मुझसे. I should not call it f1 now. It is f2 because now we are at the second stage. So it is f2. Correct. So f2 of b1 comma b2 comma b3 is equal to, ठीक है. See, now our x2 is in between 0 to 3, so the value is 4. So ये आएगा आपका फंक्शन maximum where x2 is running from 0 to 3. It is 5x2 plus 3 into 4. Do you people understand why I have taken 4 years? The reason being 4 is the minimum value as long as x2 is in between 0 and 3. Correct. And that's why it is maximum when x2 is from 0 to 3 and this is 5x2 plus 12. ये सबके समझ में आया मैंने क्या किया? Hello, are you getting this? Yes, sir. One second.
Hello. Huh. I'm sorry for that. Uh, so what we were doing? See, we have defined now this function. आपको मैं ये पूछ रहा था कि आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे मैंने चार क्यों लिया। चार इसलिए लिया क्योंकि जो मिनिमम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मिनिमम दो पॉसिबल वैल्यूज है। एक आएगी 4 और एक आएगी 18 - 2x और ये x2 के डिफरेंट रेंज के लिए आ रहा है। तो जब आपका x2 0 और 3 के बीच में या 0 से लेके 3 तक है, वैरी हो रहा है, तो उस वक्त जो मिनिमम की वैल्यू है या मिनिमम है इसकी वैल्यू 4 है। Correct. So, since I have considered this particular range, so that's why I have taken the minimum value as to be 4. So function will reduce to 5x2 plus 12. Correct. Now, since it's a linear function, now this point is very important. The bracketed function, that is 5x2 plus 12, is a linear function. तो ये since it's a linear function, इसकी जो maximum value आएगी वो end point के ऊपर आएगी, मतलब या तो 0 पे आएगी या तो 3 के ऊपर आएगी। Correct. And since it's an increasing function, see that you can very easily find out why it is increasing. If you differentiate this function with respect to x2, then the derivative is 5, which is positive. Since this function have a positive derivative, it's an increasing function. And since it's an increasing function, it will take its maximum value at the right endpoint, that is 3. Is this point clear to everybody? Please reply whether I am Yes, audible. sir. यस, आपको सबको समझ में आया यहाँ पे मैं 3 पे क्यों वैल्यू निकाल रहा हूँ। सी, मुझे अभी ये जो आखिरी वाली स्टेटमेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट। नाउ द फंक्शंस वैल्यू, सी आई एम कैलकुलेटिंग फंक्शंस वैल्यू, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। इस फंक्शन की वैल्यू मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगी, जिसको मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। So this last sentence tell me that the maximum value of the function f2 is nothing but the maximum value of the function 5x2 plus 12, and it is, and where what's the value of x2? X2 is running in between, running from 0 to 3. But if you can observe that the bracketed function is a one variable function and it's a linear function. सो लीनियर फंक्शन की खासियत ये होती है कि उसमें उतार चढ़ाव नहीं होते। सो दैट्स व्हाई लीनियर फंक्शन जो अपना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेता है, वो जो भी उसके वेरिएबल की रेंज है, उस रेंज के एंड पॉइंट पे लेगा। मतलब या तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे लेगा या तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 3 पे लेगा। अभी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आएगी या 3 पे आएगी, ये डिसीजन कैसे होता है? इसके लिए हमें ये समझना होता है कि ये जो फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ये फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसाइड करने के लिए यू सिंपली टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इट्स डेरिवेटिव इज 5, which is positive. If the derivative is positive, function is increasing, and if derivative is negative, then function is decreasing. If function is decreasing, it will take its maximum value at the lower point, that is 0. And if the function is increasing, it will attain its maximum value at the next end point or higher end point, that is the 3. Correct. Now, in our case, our function 5x2 plus 12 is increasing function, so that's why it will attain its maximum at x2 is equal to 3. So therefore f2, अभी हमें मैं b1 b2 b3 की वैल्यू रखूंगा और b1 b2 की वैल्यू जो है वो है 4 6 एंड 18, which are nothing but the right hand side values of all the three constraints. So the value 4, 6 and 18 is equal to 5, x2 की वैल्यू मैंने ली है 3 and plus 12. So it is equal to 5 3 is 15 plus 12, it is 27 at x2 is equal to 3. Is that clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will select the second range for 3 to 6. ठीक है, तो 3 to 6 में अभी क्या हो रहा है, f2 b1 b2 b3 is equal to maximum of x2, which is running over 3 to 6. ठीक है, and it is 5x2 plus 3 into 18 minus 2x2 divided by 3. Correct.
So ये 3 cancel हो जाएगा and we have maximum of x2 which is running from 0 to 6 and we have 5x2 plus 18 minus 2x2, correct, and which can be simplified as, so therefore f2 b1 b2 b3 is equal to maximum of, see, 5x2 minus 2x2, it is 3x2 plus 18 and where x2 is running between 3 and 6, correct. Again, if you observe the bracketed function which is 3x2 plus 18 and if you take the derivative is 3. So what it means, 3x2 plus 18, this function is increasing function, and since it is increasing function it will attain its maximum at 6, and therefore f2's value at 4 comma 6 comma 18 is equal to 3 times 6 plus 18, so which is nothing but 18 plus 18 and which is 36, correct. So पहले और ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, at x2 is equal to 6, करेक्ट. सो हमारे हमारे पास दो वैल्यूज है, एक है 27 जब x2 की वैल्यू होगी 3 और दूसरी है 36 व्हेन x2 की वैल्यू 6. ऑफ कोर्स 27 और 36 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 36. सो देयरफॉर f max, that is maximum value of f, is equal to 36 and which is at x2 is equal to 6. Is that clear? Yes, sir. Yes. Now we have the maximum value and we have the value of x2. Now we need to know the value of x1, and for that you can make use of the objective function. Now z is equal to, बोलो z क्या दिया है आपको, 3x1 plus 5x2 ना, Yes, sir. 3x1 plus 5x2. तो इसलिए हम z की वैल्यू लिख सकते हैं 36, 3x1, एंड ऑफकोर्स 36 वैल्यू तभी आएगी जब मैं x2 की वैल्यू लूंगा 6, करेक्ट. सो दिस इंप्लाई 3x1 is equal to 6 and therefore x1 must be equal to 2. Is that clear? And therefore the solution of LPP, Z max is equal to 36 at x1 is equal to 2 and x2 is equal to 6. This is our final answer. So I hope आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया. मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे किया क्या है हम लोगों ने, ठीक है. सी द क्वेश्चन इज, आपको एलपीपी सॉल्व करनी है. यू हैव टू सॉल्व द एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड सी हम लोग ऑफ कोर्स इस कोर्स में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से ही डील कर रहे हैं, और सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल किया था, फिर उसके बाद सिंपलेक्स मेथड, ठीक है. और सिंपलेक्स मेथड के अलग अलग वर्जन हम लोगों ने देखे, जैसे कि ड्यूअल सिंपलेक्स हो गया, रिवाइज सिंपलेक्स हो गया. उस दिन के लेक्चर में हम लोगों ने बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक देखी, ठीक है. एग्जैक्टली इन द सेम वे देयर इज वन मोर टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग, एंड यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग वी कैन सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय कंस्ट्रक्टिंग द recursive functions, correct. So here one LPP is given to you. In this LPP we have to maximize this function z, 3x1 plus 5x2, and this function is subject to x1 lesser than equal to 4, x2 lesser than equal to 6, 3x1 plus 2x2 lesser than equal to 18, and x1 comma x2 is greater than equal to 0. So this is your given LPP. Okay. Now in this LPP, first of all, the number of variables are 2, x1 and x2. So that's why we will write n is equal to 2, and the number of constraints are 3. Number of constraint is 3, correct. So since there are 3 constraints, we will call it m is equal to 3. So we have the recursive formula. Now, since we are solving this problem using forward recursive formula, so that's why we are starting with the variable x1. So the part of the function, objective function that we are going to maximize at first stage
is nothing but 3x1. तो जब हम लोग बैकवर्ड रिकर्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम लोग 5x2 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आर यू गेटिंग दिस आइडिया? हेलो. Yes, sir. Okay. So now our variable is x1 in this case. है ना. 3x1 में अपना जो वेरिएबल है that variable is x1. और x तो फिर हमें कंस्टेंट वाला जो पार्ट है उस कंस्टेंट वाले पार्ट से ये देखना पड़ेगा कि x1 ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक वैरी हो रहा है. ठीक है. सी देयर आर टोटल 3 कंस्टेंट्स और 3 कंस्टेंट्स आपको अलग अलग वैल्यू दे रही है बट यू मस्ट टेक वन सिंगल वैल्यू which will work for all the 3 constants, and that value is really nothing but the minimum which is calculated like this. समझ में आ रहा है. ये तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि हम लोग एक ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो तीनों भी कंस्टेंट के लिए काम करेगी. so it is nothing but the minimum of 4 divided by 1, 6 divided by 0, 18 divided by 3. यहाँ पे हम लोग ने सिंपली क्या किया, हर कंस्टेंट के राइट हैंड साइड को उस कंस्टेंट के अंदर जो x1 का कोएफिशिएंट है उस x1 के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है. so so our values is nothing but the minimum of 4, infinity and 6, and this minimum is 4. So that's why while maximizing 3x1 we can vary x1 from 0 to 4. That it means. So that's why in the first stage we have the recursive function as f1 at b1 comma b2 comma b3 of maximum of 3x1, where x1 is running from 0 to 4. Correct. Now see, we can take these 3 outside the maximum because we are taking the maximum of only x1. 3 is the constant. So that's why if I take 3 outside, so we can write down 3 into minimum of. अभी इसका भी रीजन फिर से वही है क्योंकि हमारे पास दो चॉइसेस है, 4 और 18 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाय 3. तो इसमें से हम लोग मिनिमम लेंगे क्योंकि मिनिमम ये ऐसा नंबर होगा जो दोनों कंस्ट्रेंट को एट अ टाइम सेटिस्फाई करेगा. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स 3 मिनिमम ऑफ 4 कॉमा 18 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाय 3. अब ये 4 कहां से आया? 4 आया पहले कंस्टेंट से क्योंकि पहले कंस्टेंट का अपर लिमिट है 4. फिर ये जो सेकंड वैल्यू है 18 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाय 3, ये आया आपको थर्ड कंस्टेंट से. व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सेकंड कंस्टेंट? बिकॉज इन सेकंड कंस्टेंट द variable x1 is absent, so we cannot make use of second constraint to find out the value of variable x1. Correct. So that's why we will directly use the third constraint, and third constraint, if you arrange that third constraint for the variable x1, then it will reduce to x1 is equal to 18 minus 2x2 divided by 3. So that I have written here as the second component in this bracket. Correct. ओके. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज. अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था वो सेकंड पार्ट भी हम लोग अभी इंक्लूड करेंगे. सो आवर टोटल फंक्शन दैट वी आर मैक्सिमाइजिंग एट द सेकंड स्टेज इज 3x1 plus 5x2, and variable which we will consider in the second stage is the variable x2. So again, from the constraint parts, we will decide the maximum limit of variable x2, which will be calculated in the same way as we calculated x1, limit for x1. So which is nothing but b is equal to the minimum of 4 divided by 0. Now why 4 divided by 0? Since we are calculating the limit for variable x2 and x2 is not there explicitly in the first constraint. So that's why the coefficient of x2 is 0, and hence the limit will be calculated as x2 is lesser than equal to 4 divided by 0, because this 0 will divide the right hand side, and we have x2 is lesser than equal to infinity, which is some finite number, but we don't know what exactly that number is. Okay. So if you understand this calculation, then this is nothing but b is equal to the minimum of 4 upon 0 comma 6 upon 1, which is by second constraint, and from third constraint we can write down 18 upon 2. 2 is the coefficient of x2 in the third constraint. So our numbers are infinity, 6 and 9, and the minimum of these three numbers is 6. So that's why we can write down the function that we are maximizing at the second stage as f2, which is nothing but
maximum where x2 is running over 0 to 6 and function is 5x2 और सी जो दूसरा पार्ट है दैट इज 3x1 3x1 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन से वैल्यू से जो वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में कैलकुलेट की है एंड व्हाई वी आर सब्स्टिट्यूटिंग क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन सा है x2 तो पूरी जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर की वो पूरी की पूरी x2 इस वेरिएबल के लिए आनी चाहिए we should not write x1 there so that's why we are substituting for x1 so x1 को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपका फाइनल रिकर्शन फॉर्मूला बन गया है ये ठीक है अभी हम लोग सिंपल ये इस रिकर्शन फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे सो उसके लिए पहले मिनिमम जो है वो मिनिमम जो कि दो अलग अलग वैल्यू ले रहा है एक तो 4 ले रहा है या फिर दूसरी वैल्यू है 18 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाई 3 तो हमें पहले ये पता करना होगा कि x2 के किन वैल्यूज के लिए मिनिमम 4 आएगा और x2 के किन वैल्यूज के लिए मिनिमम जो होगा वो 18 माइनस 2x2 डिवाइडेड बाई 3 आएगा so that particular value is 3 how to calculate that उसके लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि 4 is lesser than 18 minus 2x2 divided by 3 रीजन इज वेरी सिंपल क्योंकि अगर मिनिमम 4 आ रहा है तो 4 इस एक्सप्रेशन से छोटा होना चाहिए so if I solve this expression it gives me x2 is equal to x2 lesser than equal to 3 so x2 3 से छोटा या फिर 3 इतना हो सकता है तो इसका मतलब x2 will vary from 0 to 3 so when x2 varies from 0 to 3 the minimum value is 4 and when x2 exceeds 3 up to 6 the minimum is given by this expression which is 18 minus 2x2 divided by 3 is that clear to everybody Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन सो अभी मैंने दो अलग अलग कैलकुलेशन की है पहली बार मैंने रेंज कंसीडर की 0 से लेके 3 और 0 से लेके 3 अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे मिनिमम मैं 4 रखूंगा और मिनिमम फिर 4 के लिए मैं फंक्शन को रिड्यूस करूंगा तो यहाँ पे फंक्शन रिड्यूस हो गया 5x2 प्लस 12 करेक्ट और ये है लीनियर फंक्शन और जो कि इंक्रीजिंग है क्योंकि इसकी डेरिवेटिव आ रही है 5 तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन x2 जिस इंटरवल के ऊपर रन हो रहा है उस इंटरवल के राइट एंड पॉइंट के ऊपर अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा अभी इंटरवल का राइट एंड पॉइंट है 3 क्योंकि x2 वेरी हो रहा है 0 से लेके 3 तक सो इसलिए 3 इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा सो दैट्स व्हाई आई विल सब्स्टिट्यूट 3 in this equation 5x2 plus 12 so it reduced to 27 and this is the maximum value at x is equal to 3 okay now there is second part also so we have to think what happened when x2 exceeds 3 so when x2 exceeds 3 the minimum is given by 18 minus 2x2 divided by 3 तो मैंने क्या किया फिर से कैलकुलेशन किया और जो मिनिमम है उसके जगह पे मैंने लिखा 18 माइनस 2x2 डिवाइड बाय 3 यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया सो मुझे मिला 5x2 प्लस 18 माइनस 2x2 सो 5x2 माइनस 2x2 इज 3x2 so final function is 3x2 plus 18 करेक्ट अभी ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन वैरी हो रहा है फ्रॉम 3 to 6 again it's a linear function and its derivative is positive which is 3 so that's why it will take its or it will attain its maximum value at the right end point of the interval and this right end point is nothing but 6 so if I substitute 6 in place of x2 that equation gives me the value 18 plus 18 which is 36 which is at x2 is equal to 6 now I have two different values for function. Which one value is 27 at x2 is equal to 3 and second value is 36 at x2 is equal to 6. इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू है 36 तो अपना फाइनल आंसर है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 36 जो कि आ रही है आपकी x2 इज इक्वल टू 6 के ऊपर तो मुझे x1 की भी वैल्यू निकालनी है सो आई विल मेक यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन आई विल प्लेस मैक्सिमम वैल्यू and I will place x2 is equal to 6 because at x2 is equal to 6 function is taking its maximum value which is 36 and the corresponding value of x1 is 2 so that's why our final solution is maximum value of z that is z max is 36 and which is attaining at x1 is equal to 2 and x2 is equal to 6 is that clear Yes, sir. okay now let us solve the same question using backward recursion please practice these types of problems well because there will be two questions one question will be on forward recursion and the second question will be on backward recursion so there will be two lpps to solve in the final examination in the last question using dynamic programming problem
second, solution using backward recursion. Okay, so in the backward recursion, we will construct F2, which is at B1, comma B2, comma B3, and which is nothing but maximum of, since it's a stage 2, I will consider the second part, that is second variable, 5x2. And here x2 will run from 0 to b, where b is minimum of, बोलो क्या आएगा अभी x2 के लिए, from first constraint it is 4 divided by 0, from second constraint it is 6 divided by 1, and from third constraint it is 18 divided by 2, correct? So which is equal to minimum of infinity, 6 and 9, and the minimum value is 6, correct? So therefore f2 at b1 comma b2 comma b3 is equal to maximum of x2 running from 0 to 6 of 5x2, which can be written as 5 times minimum of, बोलो, सी, जो पहला वाला कंस्टेंट है उस पहले वाले कंस्टेंट में x2 है ही नहीं, सो वी कैनॉट मेक यूज ऑफ फर्स्ट कंस्टेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2. सेकंड जो कंस्टेंट है वो सेकंड कंस्टेंट गिविंग यू द वैल्यू 6, correct? And third constant, if you arrange it for x2, it gives you 18 minus 3x1 upon 2, upon 2. Is that clear? Yes, sir. Yes. नाउ या तो हम लोग अभी सेकंड स्टेज पे जाके मतलब कि F1 कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस मिनिमम की वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट करके ले सकते हैं. लेट्स कैलकुलेट दिस मिनिमम वैल्यू फर्स्ट. सो मिनिमम ऑफ 6 कॉमा 18 माइनस 3x1 अपॉन 2, इसके दो चांसेस है. कौन से? एक तो वैल्यू आएगी 6, या फिर दूसरी वैल्यू आएगी 18 माइनस 3x1 upon 2, correct? So we have to find out the range. So how will we proceed? We will first assume that suppose 6 is lesser, that is 6 is minimum. So of course 6 will be lesser than or equal to 18 minus 3x1 upon 2. So 2 यहाँ पे जाके अगर multiply होगा, so it gives me 12 lesser than equal to 18 minus 3x1. So it is 3x1 is lesser than equal to 18 minus 12, which is 6, and therefore x1 is equal to lesser than equal to, bolo, it is 2, correct? So our range is 0 to x1 0 to 2, the value is 6, and when x1 is in between 2 to 6, 6 na, because maximum value is 6, then function's minimum value is given by 18 minus 3x1 upon 2. So let's go towards stage 1. ये जो था ये स्टेज 2 था, ठीक है? So stage 1, what's the formula? F1 at B1, comma B2, comma B3 is equal to maximum of, अभी पूरा फंक्शन आएगा, 5x2 plus 3x1, correct? And of course x1 is running from 0 to b, where b is equal to minimum of, do calculations for x1. From first constraint it is 4 upon 1, from second constraint it is 6 upon 0, and from third constraint it is 18 upon 3, I guess.
18 upon 3. So which is nothing but minimum of 4 comma infinity comma 6. So it is equal to 4. 4 is the minimum. Therefore, function f1 b1 comma b2 comma b3 is equal to maximum of 5x2 plus 3x1, where x1 is running from 0 to 4. Is that clear? सो अभी हम लोग सी, अभी हमारे पास जो वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल जो है वो x1 है, तो हम लोग x2 के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, जो कि हम लोग पहला वाला है ना कंस्ट्रेंट f2, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देयरफॉर f1, that is the value of function at stage 1, b1 comma b2 comma b3 is equal to maximum where x1 running from 0 to 4, और यहाँ पे आएगा आपका 3x1 plus 5 times minimum of, what is it? It is 6 comma 18 minus 3x1 divided by 2. This is your function, correct? So therefore f1 at 4 comma 6 comma 18 is equal to maximum x1 from 0 to 2. It is 3x1 plus 5 times 6, because 6 is the maximum value, uh, sorry, 6 is the value when x1 is equal to 2. So it is equal to, या it is equal to नहीं लिखेंगे, अभी max लिख लेंगे डायरेक्ट. Therefore f1 max is equal to 3 into what's the value of x1? It is 2 plus 30 is equal to 36 at x1 is equal to 2. Similarly, f1's value at 4 comma 6 comma 18 is equal to maximum where x1 is running from 2 to 4, 2 to 4, and it is 3x1 plus, if I consider x1 from 2 to 4, then the value is 5 times 18 minus 3x2 x1 divided by 2, correct? So if I simplify, 3 minus 3 by 2, how much? So this is 3x1 minus 15x1 upon 2, and first plus 45. So therefore f1 at 4 comma 6 comma 18 is equal to 3 into x1 की value 4 minus 15 by 2 into x1's value is 4
and plus 45. Tell me the value. Okay, क्या कैलकुलेट आपने वैल्यू? 27. It is 30, 27. 27. It is 12 और ये आ रहा है 30, 18, 45 minus 18, it is 27. Yes, and which is at x1 is equal to 4. Correct? So what is the maximum value? Of course, maximum value is 36. Therefore, f max is equal to 36, and which is at x1 is equal to 2. Since z is equal to 3x1 plus 5x2, this implies 36 is equal to 3 into 2 plus 5x2. So therefore, 3 to the 6, so 30. So x2 is equal to 6. Correct? See, you can observe that we have the same solution. So therefore, answer hello. So you can observe the final answer. Z की maximum value Z max is equal to 36, and which occurs at x1 is equal to x1 is equal to 2 and x2 is equal to 6, है ना? सो जो हम लोगों ने बैकवर्ड रिकर्शन इस्तेमाल किया, बैकवर्ड रिकर्शन से भी सेम आंसर आ रहा है, फॉरवर्ड रिकर्शन से भी सेम आंसर आ रहा है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके. ठीक है, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, बट इस बार मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. यू विल टेल मी व्हाट इज टू बी डन. सर हाँ. सर आपने जो फॉरवर्ड वाला एक्सप्लेन किया था ना उसी से हाँ. मतलब बैकवर्ड वाला भी स्टार्टिंग का थोड़ा एक्सप्लेन करो ना. ओके, ये बैकवर्ड वाला जो है. हाँ, ठीक यस. है. सो सी व्हाट वी आर डूइंग इन बैकवर्ड रिकर्शन. So backward recursion में we will start with the second stage, and stage represents the variable. So second variable is x2. So we will start with x2. Correct. So at stage 2, what is the formula? F2 at b1 comma b2 comma b3, which is nothing but we are going to maximize 5x2, है ना, which is the part due to the variable x2. So it is 5x2, and of course x2 has some range. We have to find out the upper limit of that range. So x2 is running from 0 to b. सी एक चीज समझ के लेना यहाँ पे जरूरी है कि हमें लोअर लिमिट कैसे पता चला. वाई x2 is starting from 0? The reason being हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम में नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट दिए गए, एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट सेज दैट x1 and x2 both are greater than equal to 0. So the least value of x1 and x2 both is 0. Correct? यस सर. Yes. So we have to find out the upper limit, and upper limit is again same. C यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? B is equal to minimum of, और यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू निकालनी है, तो हर कंस्ट्रेंट में से x2 के कोएफिशिएंट से राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट में x2 नहीं है, तो इसलिए x2 का कोएफिशिएंट 0 है. सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग 4 डिवाइडेड बाय 0. Correct? We are dividing 4 by 0. Then in the second constraint there is x2, because second constraint is x2 lesser than equal to 6.
So right hand side is 6 and we are dividing by 1, which is the coefficient of x2. So the value is 6, and in the last constraint, the coefficient of variable x2 is 2, because that constraint is 3x1 plus 2x2 lesser than equal to 18. So the right hand side 18 is divided by the coefficient 2, correct? So we have minimum of infinity 6 and 9, and which is the 6, correct? सो यहाँ पे हमें x2 का लिमिट पता चल गया है, तो x2 कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, 0 से लेके 6 तक रन हो रहा है, क्लियर? तो अभी इसमें आपका फंक्शन आएगा, सी ये जो 5x2 था इसमें से 5 आपने कॉमन ले लिया क्योंकि यू आर एक्चुअली वेरिंग x2 and this x2 will vary within the feasible region, so that's why we have minimum of हम x2 के लिए अलग अलग वैल्यू निकालेंगे कंस्टेंट से, लेकिन ताकि x2 की वैल्यू फर्स्ट कंस्टेंट से नहीं निकल रही है तो सेकंड कंस्टेंट से जो वैल्यू आएगी इट इज 6, सो दैट आई हैव रिटन हियर 6, और थर्ड कंस्टेंट को रीअरेंज करके मैं x2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ 18 minus 3x1 divided by 2, so that value I have written here, करेक्ट? तो यहाँ पे मैंने पहले मिनिमम का कैलकुलेशन कर लिया, सी मिनिमम ऑफ 6 या फिर 18 माइनस 3x1 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों में से कोई भी एक मिनिमम होगा, तो या तो 6 मिनिमम हो सकता है या तो 18 माइनस 3x1 बाई 2 मिनिमम हो सकता है, करेक्ट? अभी इसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक मिनिमम 6 आएगा और कहाँ से लेके कहाँ तक मिनिमम 18 माइनस 3x1 बाई 2 आएगा। तो लेट मी कंसिडर द फर्स्ट केस, मान के चलते कि 6 मिनिमम है, तो अगर 6 मिनिमम है तो डेफिनेटली 6 क्या होगा, 18 माइनस 3x1 बाई 2 से छोटा होगा। So that's why 6 is lesser than or equal to 18 minus 3x1 by 2. 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बनता है 12, फिर माइनस 3x1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया और 12 को राइट हैंड साइड में लेके गया, so I have 3x1 less than equal to 18 minus 12 which is 6, so that's why x1 is equal to 2. तो इसका मतलब ये है कि अगर x1 जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 तक जाएगा, 0 से लेके 2 तक, तो ऐसे हालत में जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मिनिमम वैल्यू 6 रहेगी, करेक्ट? और फिर 2 के बाद 2 से लेके 6 तक जो मिनिमम वैल्यू है which is provided by this equation, that is 18 minus 3x1 by 2. Is that clear? Yes, sir. Okay. So we are done with the stage 1, stage 2. Now we are moving towards the stage 1. अभी ये फिर से समझ के लीजिएगा, हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं तो इसलिए स्टेज 2 पहले आएगी फिर स्टेज 1 आएगी, करेक्ट? और ये जो स्टेजेस होते हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो अगर आपके प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो वहां पे 3 स्टेजेस बनेंगी, ठीक है? बट वी आर नॉट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स विद 3 कंस्टेंट्स, सॉरी 3 वेरिएबल्स, तो हम लोग 2 वेरिएबल के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारे प्रॉब्लम में 2 ही स्टेजेस रहेंगे। तो फॉरवर्ड में हम लोग स्टेज 1 फिर स्टेज 2 ऐसे प्रोसीड करते हैं, मतलब वेरिएबल 1 और फिर वेरिएबल 2। तो बैकवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, पहले वेरिएबल 2 से स्टार्ट करेंगे फिर वेरिएबल 1 इंक्लूड करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे अपना F1 आया, F1 इज ऑफ B1 B2 B3। सी अभी F1 के साथ ब्रैकेट में 3 नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट है, इसलिए अगर कंस्ट्रेंट 2 होते तो फिर हमारा फंक्शन बनता F1 ऑफ B1 B2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। सो अभी सेकंड सॉरी फर्स्ट स्टेज में मैंने दूसरा जो वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, x1, इसको भी मैंने अभी अंदर ले लिया, तो अभी मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ब्रैकेट के अंदर आ गया विच इज 3x1 प्लस 5x2, करेक्ट? तो उसमें से 5x2 के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है सेकंड स्टेज में। सो व्हाट विल हैपन विद नाउ दिस न्यू वेरिएबल दैट इज x1। तो पहले तो हमें x1 के लिए रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी कि x1 कहाँ से लेके कहाँ तक वैरी हो सकता है, ठीक है, टू हैव अ फिजिबल सॉल्यूशन। सो अगेन वही फंडा, b is the minimum of 4/1, 6/0 and 18/3, तो इसमें मिनिमम ऑफ 4 इंफिनिटी एंड 6, तो ऑफ कोर्स मिनिमम 4 है यहाँ पे। तो इसका मतलब यह है कि x1 ज्यादा से ज्यादा 4 तक वैरी करेगा, 0 से लेके 4 तक, ठीक है? और हमारे पास ऑलरेडी x2 की वैल्यू है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में कैलकुलेट की है ना, 5x2 की। सी दिस वैल्यू इज ऑफ 5x2, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। तो अभी ये मेरी पूरी इक्वेशन आ गई x1 में, और x1 कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, 0 से लेके 4 तक, ठीक है? और उसमें भी हम लोगों ने इस डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 0 से लेके 2 एंड देन 2 से लेके 4। तो जब 0 से लेके 2 लेंगे तो 0 से लेके 2 तक मिनिमम की वैल्यू क्या है, 6। तो ये यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैंने 6 रख दिया, तो ये आ गया 5 6 30,
सो माय फंक्शन इज 3x1 प्लस 30, करेक्ट। अभी ये लीनियर फंक्शन है और इस लीनियर फंक्शन का मैक्सिमम मुझे निकालना है, और x1 जो है वो 0 से लेके 2 तक रन हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस वजह से इसका जो मैक्सिमम आएगा वो x1 इज इक्वल टू 2 के ऊपर आएगा, करेक्ट। सो फिर मैंने 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो 36 मिल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मिनिमम 2 पॉसिबल वैल्यूज है, तो इसलिए मैं दूसरा भी कंसिडर करूंगा कि जब x1 की वैल्यू जो है वो 2 से लेके 4 में अगर वैरी होगी तो फिर क्या होगा, तो जो मिनिमम आएगा यहाँ पे इस ब्रैकेट का, वो मिनिमम आएगा 18 माइनस 3x1/2, जो यहाँ पे मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिल रहा है कि जो वैल्यू मिल रही है मुझे, फाइनल वैल्यू इट इज 27 एट x1 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक है 36, एक है 27। तो आपको 36 बड़ी है, इसलिए वी विल चूज 36, करेक्ट। सो आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 36 व्हिच इज कैलकुलेटेड एट x1 इज इक्वल टू 2। अभी मुझे x1 की वैल्यू 2 मिल गई है, मुझे x2 की वैल्यू निकालनी है। तो x2 की वैल्यू निकालने के लिए आई विल कंसीडर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन which is z is equal to 3x1 plus 5x2। इसमें मैं z की वैल्यू रखूंगा 36 जो कि है मैक्सिमम, और वो कहाँ पे आ रही है, x1 is equal to 2, correct। So if I substitute x1's value 2 here, I will have the x2's value, and this x2's value is 6. So my final answer is z max is equal to 36 at x1 is equal to 2 and x2 is equal to 6. Is that clear to everybody? Yes, sir. Oh, Yes, sir. okay, okay, fine. So let us discuss one more problem। एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप मुझे अभी बताइए कि क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है। Yes, sir. और आपको अभी समझ में भी आएगा, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, ठीक है। सो प्लीज डू दिस प्रॉब्लम्स वेल। एग्जांपल नंबर 2, यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग टू सॉल्व द LPP maximize z is equal to 2x1 plus x2 subject to 2x1 plus x2 is lesser than or equal to 4, and x1 plus 2x2 is lesser than equal to 4, and non-negativity constant x1 comma x2 greater than equal to 0. So this is our given LPP, ठीक है। सी, और जैसे मैंने बोला कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि आपको फॉरवर्ड इस्तेमाल करना है या बैकवर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व। अभी मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सो फर्स्ट लेट अस सॉल्व यूजिंग फॉरवर्ड रिकर्शन। सर शिवांगी ज्वाइन करने ट्राई कर रही है। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है उसमें। मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वापस कुछ नोटिफिकेशन आए तो लेट मी नो। अगेन इस प्रॉब्लम में n इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एंड m इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अपना जो फंक्शन बनेगा वो दो वेरिएबल का फंक्शन बनेगा। सिंस वी आर डूइंग फॉरवर्ड रिकर्शन, हम लोग वेरिएबल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। सो बोलो फॉर्मूला क्या बनेगा, f1। F1 B1 comma B2 equal to हाँ हाँ। maximum of 0 less than equal to x1 less than equal to b ऑफ bracket to x1
2x1. Very good. Where where B equal to minimum of B. हाँ b is equal to minimum of बोलो डायरेक्ट 4 divided by 4 by 2, 2 and 4 4. by 1. No, 4 by 1 na second is. Ah, yes, sir. So it is minimum of 2 2. comma 4. 2 comma 4. So which is 2. Correct? So therefore f1 b1 comma b2 is equal to maximum x1 is running from 0 to 2. 2 to x1 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ है ना. तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट से हमें क्या मिलेगा. सी लुक एट द फर्स्ट कंस्ट्रेंट अरेंज फॉर x1. सो इट इज 4 minus Minus x2 x2 upon 2. 2. Very good. And from second constraint it 4 is 4 minus minus 2x2 upon 2x2. 1. बस 2x2. वेरी गुड. ओके सो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज. हाँ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो वी आर डूइंग स्टेज 1. ठीक है. इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए लेकिन यहीं पे. तो हम लोग क्या करेंगे नाउ मिनिमम ऑफ 4 minus x2 divided by 2 and 4 minus 2x2. ठीक है. ये मिनिमम दो आ सकते हैं. क्या मिनिमम है. एक है 4 minus x2 divided by 2 या फिर 4 minus 2x2. ठीक है. तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे. मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये मिनिमम है. तो 4 minus x2 divided by 2 will be lesser than or equal to 4 minus 2x2. करेक्ट. तो 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो आई हैव 4 minus x2 is lesser than equal to 8 minus 4x2. तो ये आ गया 3x2 is lesser than equal to 8 by 4 which is 2, and hence x2 is lesser than equal to 2 by 3. Please check the calculation. Is it correct? तो ये जो आ रहा है इसका मतलब Yes, sir. हाँ 0 से लेके 2 by 3. तो 0 से लेके 2 by 3 अगर x2 रन करेगा तो जो मिनिमम आएगा वो 4 माइनस स्टोर. ऑफ कोर्स 2 by 3 के बाद जो है फ्रॉम 2 by 3 अप टू व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू इट इज 2. सो 2 by 3 से लेके 2 तक जो है वो 4 माइनस 2x2 काम करेगा. ठीक है. बचा हुआ इंटरवल आएगा. द रीजन बीइंग हमारे पास दो ही ऑप्शंस है. तो या तो 4 माइनस x2 by 2 आएगा या तो 4 माइनस 2x2 आएगा. करेक्ट. फाइन. नाउ वी कैन स्टार्ट विथ स्टेज 2. बोलो. F2 B1 comma B2 B1 comma B2 equal to मैक्सिमम maximum of 0 less than equal to x2 less than equal to B bracket 2x1 plus x2 2x1 plus x2. Very good. x2 B Where b minimum minimum of 4 comma 4 by 2. हाँ मतलब 4 by 1 comma 4 by 2. Hmm. So which is minimum of 4 comma 2. So which is 2 again. Correct. So therefore f2 comma b1 comma b2, f2 of b1 comma b2 is equal to maximum where x2 is running from 0 to 2. और यहाँ पे आएगा अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2x1 की वैल्यू है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x2 प्लस 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ 4 minus x2 divided by 2 comma 4 minus 2x2. Is that correct? Okay. So for 0 to 2 by 3
है ना, 0 to 2/3 F2 सर 4/3 येना चाहिए ना. तिथे 4/3 यायला पाहिजे होतं का? हा 0 to 4/3. इथे चुकलंय का काय कॅल्क्युलेशन? हा 4 इकडे गेला म्हणजे हा 3x2 - x2 झाला, म्हणजे हा 3x2 आला. सॉरी 4x2 - x2 3x2, आणि हा 4 इकडे गेला, सो हा 8 - 4. हा 8 - 4 इकडे 4 राहायला पाहिजे होता, बरोबर. 4/3/4 आएगा सर. हा 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 हा, ओके ओके. 4/3. 4/3, so this is 4, so it is 4/3. Very good. So this is 4/3. हाँ, so यहाँ पे भी मुझे लेना पड़ेगा 4/3. Fine. So it is 4,4. F2 at 4,4, क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों भी कंस्टेंट के राइट हैंड साइड में 4 है. So it is equal to maximum. I will write x2 running from 0 to 4/3. So in this case 0 to 4/3 में वैल्यू क्या है? Plus 2 times 4 minus x2 divided by 2. This is the value, correct? So it is equal to maximum x2 running from 0 to 4/3. ये x2 2 कैंसिल हो गया, प्लस 4 माइनस x2. ठीक है, अभी सी यहाँ पे x2 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, सो x2 कैंसिल होगा तो ये डायरेक्ट फाइनल आंसर आएगा 4. फाइनल आंसर मतलब वैल्यू आएगी 4, एंड इट विल बी अटेंड एट ऑफ कोर्स x2 इज इक्वल टू 4/3. करेक्ट. अब इसमें तो कोई शक नहीं है. द रीजन बीइंग, जैसे मैंने बोला, इट्स अ लीनियर फंक्शन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये पूरे इंटरवल के ऊपर ही अटेंड करेगी. फॉर x2 which is in between 4/3 to 2, it is f2 4,4 is equal to maximum where x2 from 4/3 to 2, x2 plus 2 into 4 minus 2x2. So it is equal to maximum x2 running to up to 2 from 4/3, and it is ये 8 हो रहा है, ये -4 हो रहा है, so it is 8 minus 3x2. Please check. Is it correct? All of you, please tell me whether that calculation is correct. Hello? Hello? सर 3x2 हाँ, नहीं आएगा, सिर्फ x2 आएगा. -2x1 plus x2 है. minus 2x1. नहीं How? सर, I am सिर्फ not x2 getting. आएगा.
नो 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 सी, ये जो यहाँ पे जहाँ पे मैं एरो रख रहा हूँ, सी ये वाला हाँ पार्ट करेक्ट है, ओके ये करेक्ट है ना? हाँ यस सर करेक्ट है करेक्ट हाँ, तो ये 4 to the 8 हो जाएगा और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा ना, -4x2 -4x2 plus x2 which is -3x2, so it is 8 minus 3x2, that's correct. यस सर हाँ, बट आप नाउ सी, अभी ये वाली जो चीज है वो प्रीवियस चीज से थोड़ी अलग है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे जो x2 का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इफ यू कैलकुलेट अ डेरिवेटिव, दैट डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव, सो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट जो है 2, इसके ऊपर अपनी मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेगा, ये लोएस्ट पॉइंट के ऊपर लेगा, मतलब 4/3 पे लेगा। गेटिंग? सो देयरफॉर f2 max is equal to 8 minus 3 into 4/3, so it is equal to 8 minus 4, and which is equal to 4 at x2 is equal to 4/3. Is that correct? So see, दोनों से हमें सेम सॉल्यूशन मिल रहा है, so therefore z max जो होगा, मतलब कि f max जो होगा, therefore f max is equal to 4 आएगा, और वो आएगा at x2 is equal to 4/3। हम x1 कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। नाउ z क्या है? व्हाट इज z? 2x1 plus x2. हाँ हाँ, 2x1 plus x2, so z की वैल्यू 4 है, so this imply 4 is equal to 2x1 plus 4/3, correct? So 2x1 is equal to 4 minus 4/3, so it is 8/3, I guess, and therefore x1 is equal to 4/3, so therefore answer z max is equal to 4 at x1 is equal to 4/3 and x2 is equal to 4/3। समझ में आया सबके? हेलो? यस सर See, let me tell you what is its relation with the graphical solution. You can understand कि ये मतलब किस तरह से इन लोगों ने डिजाइन किया है ये algorithm. It's very easy to understand. See, यहाँ पे जो आपका एक कंस्टेंट आएगा, if this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and here 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो एक जो लाइन है वो, that line will be like this. Let me pay attention on the first constant. What is the first constant? 2x1. 2x1, 2, 4, तो ऐसे पास हो रही है वो लाइन, ठीक है? फर्स्ट कंस्टेंट, एंड द सेकंड कंस्टेंट, सेकंड कंस्टेंट आएगा ऐसे, दिस सेकंड कंस्टेंट। और अगर आपने ये सॉल्व किया ये प्रॉब्लम, मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर आपने तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 4/3, 4/3, यू कैन चेक। और आपकी जो फिजिबल रीजन आ रही है, ये फिजिबल रीजन है, दिस इज द फिजिबल रीजन।
Getting? So this region has four corner points: 0, 0, 2, comma 0, 4 by 3, 4 by 3, and 0, comma 2. And the obvious solution is 4 by 3, comma 4 by 3. This is the solution. यहाँ पे solution आ रहा है. Correct? Yes, sir. हाँ. Or one more thing that you must pay attention on. Why the x2's value is 2? क्योंकि see you can check, see ये x1 है ना, ये horizontal axis जो है वो x1 है, वर्टिकल एक्सिस जो है वो x2 है. तो x1 फिजिबल रीजन का जो पार्ट है वो फिजिबल रीजन के पार्ट में सी x1 कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना. सो x1 जो है इट इज रनिंग फ्रॉम 0 to 2. करेक्ट. एंड सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व हियर, सी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका x2 है. एंड x2 कहाँ से कहाँ रन हो रहा है, 0 से लेके 2 तक. करेक्ट. इसलिए x1 और x2 दोनों के लिमिट 2 आ रहे हैं, b की वैल्यू. इज दैट क्लियर? सी मेरा एक सजेशन रहेगा आपको, एक काम करते हैं हम लोग हाँ, मैं आपको थोड़ा एक टाइम देता हूँ आपको. और कल हम लोग क्या करेंगे, कल वापस हम लोग यही चीज को डिस्कस करते हैं. डिस्कस इन द सेंस मतलब ये जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है ना, हाउ दिस डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिकल सॉल्यूशंस आर को रिलेटेड. ठीक है, लेट अस डिस्कस. तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है अपना, the relation between the graphical solution and dynamic programming. So मैं एक थोड़ी देर के बाद है ना आपको दो तीन प्रॉब्लम में भेज देता हूँ. ठीक है. So you please try those problems using forward and backward both. मतलब फॉरवर्ड इटरेशंस, फॉरवर्ड रिकर्शन और बैकवर्ड रिकर्शन दोनों से ट्राई कीजिए आप. ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को. तो हम लोग कल इनका कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे. और कल मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं लेट मी टॉक अबाउट वो जो सिलेबस मुझे दिखाया था लेक्चर के वक्त, किसी के पास है अभी मोबाइल में? हाँ सर. तो एक काम करो ना, वो सिलेबस भी मुझे भेज दीजिए. तो ठीक है, कल हम लोग ये ग्राफिकल सॉल्यूशन और कल हाँ हाँ ओके, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. तो वी हैव टू सॉल्व ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. ठीक है. तो कल मैं आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग और यूजिंग नॉर्मल, तो मतलब वो दूसरे क्वेश्चन में भी आता है वो नेटवर्क, नेटवर्क ड्रॉ करके कैसे पता किया जाता है, और दोनों तरीके से मैं कल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. ठीक है. ओके सर. लेकिन हाँ, लेकिन अभी ये मेरे दिमाग में फिट हो गया क्योंकि अभी एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एक्सप्लेन डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूजिंग ग्राफिकल सॉल्यूशन. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड दिस यू फर्स्ट प्लीज सॉल्व 2 or 3 प्रॉब्लम्स. तो आप कोई भी एलपीपी ले लीजिए. हम लोगों ने जो एलपीपी सॉल्व किए ना पहले स्टार्टिंग में, सिंपलेक्स मेथड से हम लोगों ने कुछ एलपीपी सॉल्व किए, पता है आप लोगों को? तो उसमें से कोई भी 2 प्रॉब्लम्स ले लीजिए और उन 2 प्रॉब्लम्स को आप इससे सॉल्व कीजिए, डायनामिक प्रोग्राम से सॉल्व कीजिए. ठीक है. सिर्फ मुझे कल ये बताइए कि आपने कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए. मुझे सिर्फ वो प्रॉब्लम्स दे दीजिए, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को कल डिस्कस करूंगा. ठीक है. ओके सर. ओके ओके ओके, चलो. सो वी विल स्टॉप इट हियर फॉर टुडे. हाँ बट हेलो, लेकिन आपको ये समझ में आ गया ना आज जो मैंने पार्ट बताया आप लोगों को? यस सर. ओके 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 फाइन. ठीक है. चलो बाय, हैव अ गुड नाइट.